behind the who introduced swim lane diagrams in the book written by the two authors, right? Purpose, benefits, we looked into videos as to how do we draw a swim lane diagram, okay, and not only on a Word document but also in Excel. And then previous session we revised whatever we had done up till now in unit 1, right? So now in unit 2 essentially we will be doing the study of systems. System study is there in the agenda for today. So that's where we will be looking into the how processes are being mapped, okay, and after mapping of the processes, how do you write a standard operating procedure for a range of activities in a manufacturing organization as such. Now with respect to the manufacturing organization, what we have chosen today is how the different operations are being conducted in a dairy organization. Okay, so that's where we will be looking into, and that's where we will just start with like what are the activities we'll try to understand with the help of a video. Okay, then we will be listing down the different activities and what is being conducted, and then we are not going to go through the entire process of SOP, but yes, whatever activities we have defined or we will be identifying, we will be writing down a standard operating procedure that's ready, written and being discussed. Okay. And then after looking into writing of an SOP for a manufacturing organization, then we would be looking into probably an SOP for a service oriented organization as such. Yes, so that's where we move with this video, milk processing. Yes, hope you are able to view the screen. Yes. Madam, only link is showing. There is no video. It is not visible, ma'am. Yes, are you able to listen to this? No, ma'am. No, ma'am. Yes, Not are you audible able to also. listen to this? No, ma'am. No, ma'am. Only slide is there. Only slide is there. Okay, so I will Slide of milk share processing. the entire screen in that case. Okay. Hmm. Yes, now are you able to view? Yes, ma'am. Okay. बेकिंग से पहले दूध को किन किन प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है, तो आइए इसको जानते Are हैं। you able to listen? Yes, are you able to listen? Yes, ma'am. Okay, okay, okay. दूध को मार्केट में भेजने से पहले दूध की बहुत सारी प्रोसेसिंग की जाती है, जिसे दूध प्रसंस्करण या फिर दूध संसाधन कहते हैं। इसके अंदर दूध की गुणवत्ता की जांच होती है।
मिल्क प्रोसेसिंग या दूध प्रसंस्करण क्या है, इसको पढ़ते हैं। कच्चा दूध जो डेयरी पर प्राप्त किया जाता है उसका गुणवत्ता परीक्षण करते हैं। यदि गुणवत्ता परीक्षण सकारात्मक है, यानी उसकी फैट, उसमें प्रोटीन, उसमें अम्लता, ये सारी चीज़ें अगर सही है, तो फिर बाद में दूध का प्रसंस्करण किया जाता है, पास्तुरीकरण किया जाता है, निर्जमीकरण किया जाता है, समांगीकरण किया जाता है, और इन प्रकार की क्रियाएं होने के बाद में इनको टैंकों में भरकर वितरण के लिए भेजा जाता है। यानी अगर गुणवत्ता में वो सकारात्मक है दूध, तो उसको कूलिंग ऑफ मिल्क या पास्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन या होमोजेनाइजेशन की जो क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं करने के बाद में इनको टैंकों में भरकर बेचने के लिए भेजा जाता है। दूध संसाधन या दूध प्रसंस्करण में जो क्रियाएं काम आती है वो 4 क्रियाएं आती है, और इन आज 4 क्रियाओं के बारे में हम बात करेंगे। पहला है कूलिंग ऑफ मिल्क, पास्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन और होमोजेनाइजेशन। इन चारों क्रियाओं के बाद ही दूध को डेयरी में से पैकिंग करके भेजा जाता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कूलिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध ठंडा करना। दूध ठंडा करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर तापमान अधिक होता है तो दूध में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और दूध जल्दी खराब हो जाता है। लंबे समय तक चलाने के लिए दूध को ठंडा करना अति आवश्यक है। तो पहला प्रसाधन या इसकी प्रोसेसिंग है वो होती है कूलिंग ऑफ मिल्क या दूध ठंडा करना। दूध उत्पादन के तुरंत बाद दूध को ठंडा कर लिया जाता है, जिससे जीवाणु की संख्या बढ़ती नहीं है और दूध शहरों तक पहुंचने तक खराब भी नहीं होता है। क्योंकि तापमान अधिक होने से दूध में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है और दूध जल्दी ही खराब हो जाता है। क्योंकि अधिकतर जो जीवाणु होते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिक वृद्धि करते हैं, इसलिए दूध को 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं ताकि जीवाणु इसमें वृद्धि न कर पाए। अब जो दूध होता है उसको ठंडा करने की 2 विधि है। पहली विधि तो इसके अंदर है देसी विधि या इंडिजिनियस मेथड। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जो दूध लेने वाला या देने वाला होता है वो क्या करता है, दूध की एक टंकी रखता है और उसके चारों तरफ एक गीला कपड़ा रखता है ताकि दूध ठंडा रहे। दूधिया का मतलब होता है दूध जो गांव से लेता है। गांव से दूध इकट्ठा करते समय इस शर्त पर उनको लाइसेंस दिया जाता है कि वे बर्तन के चारों ओर कपड़ा लगाकर उसे पानी से तर रखें, जिसके वाष्पीकरण से अंदर का दूध हमेशा ठंडा रहे। ये तो होगी देसी विधि ठंडा करने की, कि वो क्या करता है, दूध के बर्तन के चारों तरफ एक कपड़ा लपेटे रखता है जिससे दूध ठंडा रहता है। ये देसी विधि है। लेकिन इसके बाद एक साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि भी है, जिसको भी हम पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के शीतक काम आते हैं जो दूध को ठंडा करते हैं। कौन कौन से शीतक है, जैसे तल शीतक, कैबिनेट शीतक, प्लेट टाइप शीतक, धुरी ट्यूब वाले शीतक। ये क्या करते हैं, एक प्रकार के बर्तन होते हैं, इसके अंदर दूध ठंडा रहता है और इन शीतकों में दूध को ठंडा करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम प्रयोग में लाए जाते हैं। अगर इन शीतकों में या इन बर्तनों में ठंडा पानी डाला जाता है तो क्या होता है, इसमें पास्चराइज्ड दूध को 10 से 21 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको ठंडा कर सकते हैं। ये कब है, ठंडा पानी डाला जाता है अगर इन शीतकों के अंदर। दूसरा है अमोनिया। अगर इन शीतकों के अंदर अमोनिया डाला जाता है तो दूध को 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको ठंडा कर सकते हैं। अगला है ब्राइन विलियन। इन शीतकों में ब्राइन विलियन डाला जाता है। ब्राइन विलियन क्या है, बर्फ और नमक का मिश्रण होता है। इनको शीतकों में डाला जाता है तो दूध लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। यह है साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि दूध को ठंडा करने की। दूध को ठंडा करने के बाद में अगली जो प्रसाधन या प्रोसेसिंग आती है वो होती है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, यानी दूध का पास्तुरीकरण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। अत्यधिक जो डेयरी होती है उसके अंदर मिल्क का पास्चराइजेशन किया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक चले और ख़राब ना हो, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब दूध ले जाया जाता है तो बीच में ख़राब ना हो। पास्चराइजेशन क्या है और किस प्रकार से दूध को प्रोसेसिंग में लाया जाता है, इसको पढ़ते हैं। पास्चराइजेशन के अंदर एक विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है
ये अलग अलग डेयरी के अंदर अलग अलग साइज की होती है, छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है। लगभग इसकी लागत जो होती है वो 3 लाख से लेकर 8 या 10 लाख तक होती है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क या दूध का पास्तुरीकरण विधि का नाम होता है, वो फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पास्चर के नाम से लिया गया है। जो लुइस पास्चर है उसके नाम से इस विधि का नाम दिया गया है। इसकी परिभाषा की बात करें तो इसमें ये इस परिभाषा के अंदर कहता है कि वह क्रिया जिसमें दूध को निश्चित तापक्रम पर निश्चित समय तक रखकर हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन दूध के खाद्य महत्व तथा क्रीम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इसको इस तरीके से गर्म किया जाता है ताकि इस दूध उफान न आए, या फिर दूध के अंदर जो वसा होती है या जो हम बोलते हैं क्रीम होती है उस पर कोई प्रभाव न पड़े। दूध की पास्तुरीकरण के अंदर 3 प्रक्रियाएं होती है और इन 3 प्रक्रियाओं के कारण ही दूध लंबे समय तक चलता है। इसमें पहली प्रक्रिया होती है दूध को गर्म करना, दूसरा है होल्डिंग या धारण करना, और तीसरा होता है ठंडा करना। दूध को लगभग 63 डिग्री सेल्सियस या 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि निश्चित तापक्रम, या तो दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा या फिर इसको 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा। इसके बाद होल्डिंग का मतलब होता है जो 63 या 72 डिग्री सेल्सियस था इसको निश्चित समय तक उसी तापमान पर रखना, यानी होल्ड रखना। 63 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट के लिए इसको रखा जाता है। अगर हम इसको 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं तो इसको होल्डिंग टाइम इसका कितना होता है, 15 सेकंड होता है। होल्डिंग टाइम इसका 15 सेकंड होता है। अगला है ठंडा करना। दूध को गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा करना पड़ता है, क्योंकि इससे बचे हुए जीवाणु भी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। यानी हम जो पास्चुराइजेशन की जो विधियां पढ़ेंगे आगे दो, उन विधियों के अंदर ये 3 प्रक्रिया ही काम आएगी, गर्म करना, होल्डिंग करना और ठंडा करना। इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा ही हम इनकी विधियों को पढ़ेंगे। तो जो पास्चुरीकरण है उसकी लगभग 2 विधियां होती है। पहली जो विधि होती है वो होती है कम ताप अधिक समय विधि, जिसको बोलते हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड, या फिर इसका शॉर्ट नाम है वो होता है अल्टी अल्टी। अल्टी अल्टी का मतलब होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इस विधि में क्या होता है, एक दोहरी कुंड वाले विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। इस मशीन के अंदर ही दूध को डाला जाता है। इसके अंदर दूध ठंडा होता है, होल्डिंग होता है और ठंडा भी होता है। इस विधि को पढ़ते हैं। इस विधि को धारण या बेंच पास्चुरीकरण भी कहते हैं। धारण मतलब होल्डिंग। इस विधि के अंदर दूध को लगभग काफी समय के लिए धारण किया जाता है या रखा जाता है, इसलिए इसको धारण या बेंच पास्चुरीकरण भी कहते हैं। इस विधि में दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए रखा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अल्टी अल्टी के अंदर दूध को कितनी देर के लिए रखा जाता है, तो 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए रखा जाता है। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए रखा जाता है। कौन सी विधि में? अल्टी अल्टी विधि में रखा जाता है। गर्म करने के बाद इसको तुरंत 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर लेते हैं। यह विधि दोहरे दीवार वाले कुंड में पूरी की जाती है। दोहरी दीवार वाले कुंड का मतलब समझ रहे होंगे आप कि डबल लेयर जिसके अंदर होती है, 2 लेयर वाला कुंड या 2 लेयर वाला यंत्र। 2 दीवारों के बीच में जो रिक्त या खाली स्थान होता है उसको जैकेट कहते हैं। और दूध को गर्म करने के लिए जैकेट में गर्म पानी भर देते हैं। अगर जैकेट में गर्म पानी भर देते हैं तो दूध गर्म हो जाता है। यदि दूध को ठंडा करना है तो उस जैकेट में अपन ठंडा पानी भर देते हैं। इसमें कुंड की दीवारें स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। कुंड के अंदर एजिटेटर लगा होता है। क्या लगा होता है? एजिटेटर लगा होता है, जो दूध को हिलाकर दूध को समान रूप से गर्म करता है। आपने मिक्सी के अंदर देखा होगा कुछ ब्लेंडर जैसा होता है जो उस चीज़ को घुमाता है। उसी तरीके से इसके अंदर एजिटेटर लगा होता है जो दूध को समान रूप से हिलाता रहता है ताकि इसके अंदर वसा या इसके अंदर क्रीम अलग ना हो। इसमें तापन, धारण और ठंडा करना,
ये तीनों प्रोसेसिंग इसी के अंदर ही होती है। किसके अंदर? अल्टी के अंदर। और अल्टी के बाद में हम बात करते हैं दूसरा HT क्या है? यह है उच्च ताप अल्प समय विधि। ये दूसरी विधि है पास्चुराइजेशन की, उच्च ताप अल्प समय विधि यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। इसको शॉर्ट में HT भी कहते हैं। इसके अंदर भी एक विशेष प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है और इस प्रकार की जो मशीन होती है अलग अलग डेयरी के अंदर छोटी या बड़ी हो सकती है। इस विधि का दूसरा नाम सतत पाश्चुरीकरण भी है, क्योंकि इस विधि में दूध लगातार बहता रहता है। इसमें दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक गर्म करते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का, HT के अंदर दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड गर्म करते हैं, लेकिन हमने अल्टी के अंदर पढ़ा था कि 63 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम उसको 30 मिनट तक गर्म करते हैं। लेकिन HT के अंदर 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं, क्योंकि इसके अंदर लगातार दूध बहता रहता है, जल्दी जल्दी इसके अंदर पाश्चुरीकरण होता है और तुरंत बाद इसको 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा भी कर लिया जाता है। जो पाश्चुरीकरण है HT के अंदर, इसके अंदर टोटल 6 भाग होते हैं। पहला तो है रीजनरेटिव सेक्शन, या इसको पुनर्जनन विभाग भी कहते हैं, फ्लोट कंट्रोल टैंक। अगला है हीटिंग सेक्शन यानी गर्म करने वाला भाग, होल्डिंग ट्यूब धारण नली, फ्लो डिवर्सन वाल्व, और अगला है कूलिंग सेक्शन। ये 6 प्रकार के पाश्चुरीकरण के अंदर भाग होते हैं और इसकी विधि पढ़ते हैं कि किस प्रकार से HT के अंदर दूध का पाश्चुराइजेशन किया जाता है। सबसे पहले कच्चा दूध संग्रहण कक्ष से मशीन के पुनर्जनन भाग में आता है। दूध के बहाव को समान रखने के लिए फ्लो कंट्रोल वाल्व काम आता है। पुनर्जनन भाग में 2 ट्यूब एक दूसरे के अंदर लगी होती है। दोनों ट्यूब के बीच में जो खाली स्थान होता है उसके अंदर कच्चा दूध पाया जाए। इसके अंदर क्या होता है, डबल लेयर वाली एक नली होती है, उस नली के अंदर कच्चा दूध बहता रहता है और वो हीटिंग सेक्शन में दूध गर्म हो जाता है। हीटिंग सेक्शन एक अलग प्रकार का नली है, उसके अंदर क्या होता है, दूध गर्म होता रहता है और इसके बाद दूध तापकों से निकलकर ठंडा होने के लिए कूलिंग सेक्शन या शीतकों में चला जाता है। जो हीटिंग सेक्शन में होता है दूध लगभग 15 सेकेंड के लिए रहता है। 15 सेकेंड में जल्दी से गर्म हो जाता है और तुरंत दूध चलता चलता कूलिंग सेक्शन में आ जाता है। वहाँ पर दूध जल्दी ही ठंडा हो जाता है। वहाँ से ठंडा होने के बाद में शहरों के लिए भेज दिया जाता है, यानी बेचने के लिए या फिर इसको पैकिंग करने के लिए भेज दिया जाता है। अब HT के अंदर दूध पाश्चुरीकरण करने का लाभ क्या होता है? देखो, इसके बहुत सारे लाभ हैं। इसका पहला जो लाभ है वो है अधिक दूध के लिए ये उत्तम है, यानी दूध अगर ज़्यादा है, डेयरी बड़ी है, तो ये इसके अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर समय कम लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 15 सेकेंड तक ही इसके अंदर रुकता है दूध और अल्टी के अंदर 30 मिनट का समय लगता है। इसमें संपूर्ण क्रियाएं एक ही मशीन में हो जाती है। संपूर्ण क्रियाएं का मतलब कौन कौन सा हो गया? गर्म करना, होल्डिंग और ठंडा करना। श्रम व व्यय कम लगता है, मेहनत कम लगती है, इसमें कम जगह की आवश्यकता होती है, हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और बड़े दूध व्यवसाय के लिए ये उपयोगी होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन। इससे पहला कौन सा था? पास्चुराइजेशन, जिसके अंदर हमने अल्टी और HT पढ़ा है, और अब पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन या निर्जमीकरण। व्यापारिक रूप से निर्जमीकरण का तात्पर्य दूध को 200 डिग्री फ़ारेनहाइट से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लगभग इस तापमान पर हम इसको 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, जिससे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। यानी यह विधि पहले वाली विधि के समान है, लेकिन बस इसके अंदर अंतर इतना ही है कि इसको 200 से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब होता है लगभग इसमें 94 डिग्री सेल्सियस और 211 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब होता है 98 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका तापमान बहुत अधिक होता है। इस तापमान पर इसको गर्म किया जाता है ताकि जीवाणु सारे इसके अंदर नष्ट हो जाए और इसके बाद दूध को ठंडा करके दूध को लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं। विधि की बात करें तो सबसे पहले दूध को छान कर
100 से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर हम गर्म करते हैं। इसके बाद दूध को समरूप तरल बनाने के लिए यानी एक सा बनाने के लिए 150 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर फिर से गर्म करके समांगीकरण यंत्र से 2000 से 2500 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दाब डाला जाता है। इसमें क्रीम लेयर के रूप में दूध के ऊपर प्रकट नहीं होती है। इसमें क्या होता है, समांगीकरण यंत्र से हम इस पर दाब डालेंगे तो क्रीम की लेयर नहीं बनेगी या इसके अंदर परत नहीं बनेगी, अलग से किसी भी प्रकार की परत या वसा अलग नहीं होती है इसके अंदर। इसके बाद इन्हें बोतलों में भरकर 212 से 230 फ़ारेनहाइट तापमान के पानी से भरे टैंक में डाला जाता है। इनको बोतलों में भरने के बाद क्या किया जाता है, बड़े बड़े पानी के टैंक होते हैं, उसके अंदर गर्म पानी होता है 212 से 230 डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर टैंक में डाला जाता है। और टैंक में डालने के बाद में क्या करते हैं, इनको ठंडा करके शहरों में भेज दिया जाता है। तो एक निर्जमीकरण भी एक प्रकार का मिल्क प्रोसेसिंग है जिसके द्वारा दूध खराब नहीं होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे समांगीकरण या होमोजेनाइजेशन। यह भी एक प्रकार की दूध प्रोसेसिंग या दूध प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, यांत्रिक विधि द्वारा दूध की वसा गोलिकाओं को एक समान आकार वाले छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे दूध संग्रहण करते समय क्रीम या लेयर के रूप में एकत्रित न हो और सारे अवयव दूध में समान रूप से उपस्थित हो। इस क्रिया में समांगीकरण यंत्र द्वारा अधिक दबाव पर दूध को संचालित करके पूरा किया जाता है। इसमें भी एक विशेष प्रकार की मशीन होती है। इसमें क्या होता है, दूध को गर्म करने के बाद में इसके अंदर उस यंत्र द्वारा दाब डाला जाता है, जिस दाब के द्वारा पूरा जो दूध होता है वो एक समान से घुल जाता है और क्रीम या इसके अंदर वसा अलग नहीं होती है। और इस प्रकार से दूध को हम लंबे समय तक चला सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध को किस प्रकार से लंबे समय तक हम इसको चला सकते हैं। इसी तरह के दूध से संबंधित अन्य जानकारी देखने के लिए लगातार चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू। मिल्क प्रोसेसिंग के बाद दूध को लगभग इस प्रकार से पैकिंग किया जाता है और बाजारों में भेजा जाता है। Okay, so now that's where I thought I couldn't find a complete video in English, and I thought maybe in Hindi it not only completes the entire processing, but it also helps in what you say, understanding the processes. So now that's where we were looking into the manufacturing of milk as such, right? So yes. So that's where now 6 major operations or processes that we have mapped for the purpose of manufacturing of milk are, we have divided this into 8 major processes. Like first is milk procurement. Now they haven't shown milk procurement as such over here. Okay, they have started right from storage and standardization of milk. So first, essentially we'll be receiving the milk from the different districts or villages wherever the farmers are having excess of milk. Okay, apart from the daily requirement is being procured and it has been brought to dairy. So that's another thing, that's milk reception. Then we are having storage and standardization of milk. Then we looked into the different processes that it goes through, that is pasteurization and homogenization. After everything is being done, again milk is stored, then it is packed, and then it is dispatched. So these are the different processes that we can look into if we think of mapping the process in the manufacturing of milk. Now, if we look into the activities involved in the manufacturing of milk or into each of these major manufacturing processes that we have identified, so that's where we'll be listing down the activities one by one. Okay, and these listing down of activities will help us in the preparation of standard operating procedures, right? So wherever you go, the procedure would remain the same for manufacturing of milk, irrespective of the dairy that you will be visiting. Okay, so now let us look into the steps one by one. So first is collection of raw milk from the collection centers. Now here
It means collection centers that's we speak about. It's with respect to the district cooperative societies that we are speaking about from the perspective of a cooperative dairy, okay, where milk is collected from different districts, okay, in cans, and these cans then they are then brought to the dairy. Then the next process or next activity will be unloading of the cans of raw milk. Now these cans, once they are reach from the district to the dairy, so they are unloaded by, say, the daily wage workers that are employed by the dairy, okay, and the laborers carrying the cans in the tempo. Right, time basis, the tempo is owned by the dairy or no, and then these dairies, they pay them every 15 days for carrying or for procuring the milk from various destinations through the different routes, okay, and this payment that we are making to the tempos for carrying the milk to the dairies will be called as the procurement cost, okay. So record is maintained over your route wise again for the analysis purpose to find out the procurement cost of milk per liter, right? Then we look into the next activity, that is grading. So by grading, it means that the procured milk, it is graded, it is checked by the laborers to find out the quality of milk with respect to whether to see whether the milk is fresh or it has become sour, right? So if it is found sour by human sniffing, then it is being treated separately. Not necessarily every time it will be returned, but it would be kept for the purpose of for preparing your this thing, what you say, dahi, right, or curd. Next step is, so after the milk that is unloaded, it is graded by human sniffing. Then the next activity will be weighing of the milk, taking a sample of the milk and transfer of this milk sample to the laboratory for testing purpose. Now, here in the laboratory, the milk that is being collected, it is tested for the SNF percentage, okay, saturated non-fat percentage, and fat percentage with respect to the milk that is being received, okay, and the records are being maintained. So once the sample is taken, it is tested in the laboratory, then what is done is the milk is filtered, okay, it is filtered from the cans. Then an online storage in dump tank, so where the milk after the filtration purpose, okay, the milk that is being received, it is stored in a tank which is usually called as the dump tank, where you dump in all the milk that has been filtered. Then there is an online filtration process that takes place. Once again, the milk is stored in the tank, is then filtered again. Okay. Then chilling at 5 degree or below, 5 degrees Celsius or below. The entire milk which has been tested, which has been filtered twice in the dump tank, it has been chilled, okay, to prevent the growth of any microorganisms within the milk, or to prevent the milk from getting sour, okay, in order to maintain the quality of milk or to stop the deterioration of the milk, in the quality of the milk, chilling is being taken place. Then this chilled milk is stored in the tanks, okay, before it is moved on to the next operations, because in a dairy, on an ongoing basis, twice a day, in the morning as well as in the evening, the dairies keep on receiving milk. So after the entire checking is been done, it has to be stored for further processing. Now the next step, as we viewed into the video, is standardization. What do we mean by standardization? That was what was mentioned. Now this process is carried out to bring the entire milk that has been collected, okay, which has been collected, which has been tested, which has been filtered, which has been chilled. So what has happened, what do they do is that they bring the milk that is being received to some standard form. Okay, now this standard form refers to, again, a combination of fat percentage and solid non-fat percentage, that is the SNF that we call it, which is required for manufacturing the different products
from pasteurized milk. So in case the milk doesn't have that required fat and not an SNF percentage, then it is not capable of utilizing it for the production of different products. Okay, and then also again to meet certain legal standards that are prescribed for the purpose of healthy milk consumption, right? So you bring it to a standard platform, a common this thing where the fat percentage and SNF percentage is maintained. Then next process, as we have seen, pasteurization, the ways longer process with lesser degree Celsius and higher degree Celsius and a shorter process. So that's where we have looked into the pasteurization. Now this process is carried out to increase the shelf life of the milk, right? Now this process helps in maintaining the quality of the milk. We have studied how by removing the microorganisms, okay, and the enzymes that are present in the milk that could result into spoiling of milk over the period of time. So that's what pasteurization takes care of. And then homogenization. Now what takes place in homogenization is, now the what if you are storing a milk over a period of time, what happens is gradually with time the fat globules, they start accumulating. So you can see the layer of cream that gets accumulated on the milk in whatever form or whatever or you can say the container that you are storing milk into. Okay, so homogenization is a process that will help in breaking of these fat globules. Okay, so this results into an equitable distribution of that cream within the milk. And this process will prevent the formation of cream layer on the milk. So that's where milk gets homogenized. Then the milk is transferred from silo. Now, what do you mean by silo? It is nothing but a tank. Again, it's a kind of a storage tank, a bigger and a smaller one. So accordingly, it is called as a silo. Much big in quantity, in volume to accommodate large quantity of milk. So transfer of milk takes place from silo to the storage tanks once it has been homogenized, right? So homogenization takes place within the silo, and then from the silo it is moved to the storage tank. Now again, once again, samples are being drawn and then they are tested for the desired quality of milk so that it can be further processed. Once again, online filtration. Now this process, it helps in sorting out suspended particles, if any. So in case the milk is you can view, or even if you are not able to view with your naked eyes, if there are any particles that will further result into spoiling of milk, so that's where the online filtration process helps out in sorting out these suspended means one that floats or in with the milk, right? So suspended particles in the range of say 0.05 to 10 microns, and this helps to eradicate almost 99% of the pore forming bacteria within the milk. Okay, next step is pouch packing. So that's where we looked into the different machines, right, where the plastic sheets flow and then where it get the milk comes from a pipe and it moves into the pouches, and where the pouches are being sealed, right? So that's process that we viewed. So machines are used to fill in the milk of desired quantities, half liter, 1 liter, etc. Then once the pouches of milk are ready, those are the pouches that we receive in dairies or in the grocery stores even, right? Or we receive next to our door. So these pouches, then they are filled up in crates, right? So that's where yes, activity number 7 is crate receiving and cleaning. So before these pouches are filled up in the crates, these crates that carry the milk pouches, they are cleaned and they are received for collection of pouch packed milk of different quantities, right? So once the crates are filled, once the pouches are filled, they will be placed in the appropriate crates carrying that much amount of quantity of milk.
Once again from the crate, a pouch of milk will be picked up and it will be, sent for sampling purpose to to test the quality of the milk that goes into the pouch packs, right? And then loading and dispatch, that is the last activity that we look into, where the crates of pouch pack milk are further loaded, maybe in a tempo or a vehicle of desired capacities, and then they are further transported to say the distributors, or in case the dairy is having any franchisees, then to the franchisors, and then to the departmental stores or any other grocery stores where from people or the customers like you and me collect milk from in pouch packs, right? So these are the different activities that are, so we identified first in the manufacturing process, we identified 8 major steps first. Okay, so this is what we have looked into the processes, and then we identified the activities. Now looking into step by step, so we have looked into each and every activity, right from collection of the milk, okay, to the different operations that it goes through, then the tests at various levels that are being conducted to check whether it is as per the required quality standards, and then they are filled up and then they are dispatched to the customers. So entire range of activities have been considered over here, right? And this is going to help us write down our standard operating procedure. Okay, so that's where we have created an SOP for weighing, sampling, and transfer of milk sample to a lab. Okay, so once you are aware of the activities, first you should be knowing the entire process. Knowing the process, then you identify the activities, and that's where it will help you to prepare a standard operating procedure. So any person who enters into the dairy, who is appointed to carry out a work at a particular workstation, handing over the SOPs, he is aware of what he is supposed to do right from day one, right? So this was with respect to now how to write a standard operating procedure, what are the steps, 3 steps that we have observed, right? So that's where we are aware, and that's how we create this for a manufacturing organization. Now with respect to a service organization, again we have looked into, or we have picked up an example of service organization, standard operating procedures for issue of I-cards to the college students. Okay, so every one of us over here has gone to the standard procedure for taking admission for your MBA course, right? So that's where, what is the procedure if anybody asks you for taking the admission till the time you receive your I-card, and it's made sure that you are a member or a student of the college, right? So that's where we look into these 15 steps or procedures one by one. So first is check whether the admission process with respect to uploading of documents. So essentially, before entering yourself into the admission process itself, what did you do? You uploaded your documents, all your certificates and all. You scanned the copies and you uploaded the documents. Okay, and then you filled up the requisite form of the institute that you were interested to take admission into. Okay, so on the respective website. Then you file the original documents. So that's the standard procedure that you look into. Then after that, you paid the minimum fees during the admission process. You are required to pay some minimum amount, 5,000, 10,000, that varies from college to college. So you paid the minimum fees for admission process. Okay, and the balance is agreed to be paid in given installments, or in case you will be making a bit late payment in comparison to the dates that have been sanctioned to you, then you will be taking the permission of requisite authority, the dean or the director of the college, and then that permission letter, okay, which is sanctioned by the authority, is being attached for you if you have not paid the requisite amount of fees, right? Then your photocopies are received, division and roll numbers are allotted, all the details of the students are verified,
by them in the records that are maintained. Vendors are contacted for quoting the supply of I-cards for the purpose of quotation, the costs that would be involved, the funds that will be required to be released, and so on. Then finalize the quotation with the suppliers or with the vendors who are ready to supply you the given I-cards in a given amount of time. Consider, finalize the quotation and the vendor, then payment terms, decide on it, okay, and give the specification as to the manner in which you want your I-card of your student to be printed, okay, for the college. And then finalize the sample that is issued. You will be receiving the sample saying that is this being okay, and once you finalize the sample, then you will be placing the order. Then after the order is placed in a given time, you receive your I-cards. Then the student list is prepared for the actual receipt of I-card. So as in how the student receives the I-card, he is going to put his signature across the paper and the date. So that to show that, indicate that he has collected the I-card, right? So later on, the staff doesn't want any complaints as to non-receipt of I-card by the students. Further, the students will be verifying, okay, looking into that everything is correct, then verify that the I-cards are received by the students as ordered and the details are being provided therein. And then once everything is okay, there are no changes required to be made on the I-card of the student. Okay, in case there are any changes, then again the vendor has to be informed with respect to what are the changes that are required to be carried out. If no changes are there, then you will be making the final payment to the vendor who has issued the I-card. In case there are changes, you will be asking the vendor to make the requisite changes, and later on, after they are being done, that's where you will be making the payment, right? So that's where we have looked into the standard operating procedures, okay, over here in case of a manufacturing organization, and over here just one of the activity with respect to a service organization, an educational institute who is who is taking care of the education, imparting education to the students through their faculty members, right? So this is with respect to the standard operating procedures and the study of systems. Now, next time onwards, our syllabus is asking us to study 5 such systems. Okay, so that's where from next session onwards, we will be looking into essentially different systems, okay, and the manner in which, and that's where then you can come up with identification of major processes in that system, then identifying the different activities in that system, and then preparing maybe an activity wise flow chart or a swim lane diagram where it will be easier for you to for employees to go through the different processes or come up with the standard operating procedures. Fine. So yes, so that's where we stop over here for today. Now, with respect to whatever we have discussed today, it is one of the research papers that I have written. That's where I have identified the different, activities that goes into the manufacturing of milk. So the entire data, I have personally visited the organization, the dairies. I have looked into the operations. I've taken my own notes. Okay. And that's where I was able to understand the entire system with respect to the manufacturing of milk. What goes exactly into it? Okay, now the study was made with not only understanding the operations involved, but again identification of what are the idle time activities that don't value add. Okay, looking into such activities and trying to eliminate them from the system so as to reduce down the costs with respect to the manufacturing. So that's where a detailed study of the system was required to be done, right? Yes, so that I thought that could be the best example to quote in front of you today, because everybody is aware of this product. Fine. Yes, so thank you, class. So next time we will be essentially be meeting with another system where we will be looking into, if a video is available, we'll be looking into a video.
okay, for better understanding. Else we will be brainstorming, listing down the different processes involved, coming up with the activities, okay, and then probably with a SOP, standard operating procedure. Fine. Yes, so that's where we stop over here for today. Yes, thank you, class. I hope you enjoyed this example today. Yes, ma'am. Yes. Thank you. Thank Yes. you, ma'am. Thank you, class.